एक तो West, number one is the Western world. The perception is the Western world is confrontation. I mean, the women there, they try to divide the invisibles. Men and women are one entity. They cannot be divided into two. I mean, single entity, we say men and women having two segments, existence of one depends upon the very existence of the other, mutual growth, dependence, need, love, not conflict to survive. So then we have the social, economic, and the cultural interdependencies. So these are two, I mean, this is what the Western world they misunderstood rather. And then if we come to the Muslim world, that is insufficient interpretation of the faith, conflict in teachings and practices, wide difference in actions and words, try to bring religion in every aspect of life to justify the deed, not to learn and follow what the Quran and the religion says, but to justify your own actions. To close the current gender gap and level up the playing field for everyone, we need to involve men and women, which is the topic of today, in the right direction, I would say, in the dialogue to have an impact of convergence. The fact remains that that majority of the leadership positions in government and businesses are held by आपकी क्लास है यहाँ पे? Okay. So they cannot be taken in a separate way. So actually what happens is that instead of narrowing the gap, there is a need, a holistic approach focused at convergence and collaborations. Obviously, solely it cannot be done by the women, we say. Right, if we go further slightly, while women may continue to push for their rights, the inclusion of men as allies is a pivotal step towards genuine progress. For men to be effective advocates for women's rights and equality, acknowledging and understanding their own privilege is an imperative and prerequisite, what we say. We have the examples of Colombia, they have succeeded partially, but I don't think the success in Colombia is a long-term measure. It is a short term where they find number of challenges also at the same time. The other point is, apart from the Western world, what Islamic world is thinking about it. In the criticism discourse of Islamic law, there are three main groups, in fact, amongst us. One is the conservative group, number two, the liberal school of thought, then we have the collaborative school of thought. If you look at the conservative group, they perceive Islamic laws as providing limited space for women. This view departs from the perception in which women are considered weak and less strong physically. Thus, they have to be protected in any aspect of life. Based on their view, what they call the conservative group or the school of thought, men are superior than women. If you go on to the other side, which is again extreme group, liberal view, they contain more counter discourse toward the Islamic law of fiqh, which demands absolute freedom rights and the women's movement they have. So they have different, I mean, the two groups, they have different views. Then the third group, the collaborative, they follow a mid-course between conservative and liberals. But if you specifically go on to the teachings of Islam and purely taking few examples, the ayahs from Quran, Allah subhanahu wa ta'ala addresses both equally men and women. I will quote some of the ayah from the Quran and they would clearly indicate what Allah says and what have been the replies of I mean Hazrat Adam alayhi salam and Hazrat Hawa. Both the Quran is the fundamental guidance for what we say, with the Muslims we say. And if you look at the total surah, 114 surah in Quran, one is named dedicated specifically for women, that is Surah Al-Nisa. The Surah Al-Nisa clearly mentions the rights of women and the rules that regulate the women are supposed to act in their marriage, family life, and their other social life. There is no such separate privilege for men. It is only for women. One surah has been named by Allah subhanahu wa ta'ala. In the perspective of Islam, humans have two capacities, as it is said in the Quran, namely as the servant that is up and as the representative of God or the caliph on the earth without differentiating the sex. I mean, it has not been specifically addressed to the man only that he is the caliph on this earth. As it is said in Surah Hujurat, it says, Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmin min qawmin asa an yakunu khayru minhum wala nisa' min nisa'in asa an yakuna khayru minhunna ولا تلبسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. O ye who believed, let not one people deride another people who may be better than they, and not let women
deride other women who may be better than they, and defame not your own people, nor call one another by nicknames. Bad indeed is evil reputation after the profession of belief, and those who friend are not the wrongdoers. Similarly, if you go on to Surah Baqarah and Surah Al-Araf, again Allah Ta'ala addresses both men and women in one addressal form. It says, "Kulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka al-jannata kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin." And we said, "O Adam, dwell thou and thy wife in the garden, and eat uh, therefrom plentifully wherever you will, but approach not this tree, lest you be of the wrongdoers." Then they apply again at the same of وَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَنْهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. If you look at all the three ayahs, it is addressing to both men and women. At the same time, the replies is also from the both genders. Like in the third ayah, it says from Surah Al-Araf, قال ربنا ظلمنا أنفسنا. They both said, Our Lord, we have wronged ourselves, and if thou forgive us not, and have not mercy on us, we shall surely be of the lost. The point I just want to bring home from the Quran is that the Allah is addressing to both men and women together as one entity, and then again saying that both are responsible for your own deeds. Now, if you look at this ayah from Surah Al-Nahl, it says, "Man amila salihan min zakarin aw unsa." मैं थोड़ा सा बीच में छोड़ रहा हूँ because we should have more time for discussion. "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Whoso acts righteously, whether male or female, both are equal, is a believer, we shall surely grant him a pure life, and we surely bestow on such their reward according to the best of their works. So this is what the Quran says in the last ayah, which I have taken from Quran. Rabbana wa Atina, again, both are praying from the God separately. I'm taking as the one entity which I want to bring home. Then the answer from the Lord is also to both of them. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ, specifically has said to the male and the female both. بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب. Now, if you can read at your own time, and you must have read also, the translation, Allah is addressing the both as entity. Similarly, the answer is going to Allah also as saying, we are for us. Allah pray to Allah to do is for us. Now, this is what, the spirit of the Quran in a very short span of time, which I can highlight. What actually the question is that how can men be allies, which is actually the answer, the basic question in the today's discussion, and catalyst for gender parity. Men can play a crucial role as it is perceived. It is there in the literature through number of studies as allies, through intervening in instances of biases, discrimination, work-life balance, and policies that promote equal opportunities. Men can further drive progress. There are a number of studies there are also, and there are several steps also given in one of the studies which I went through yesterday on filling the gap between this different domains of men and women. The 7 principle, it says, actively listen to women's perspective, reflect on your own power and privilege, and this is the other one also. What in a very short span of time now, I bring a suggested form of strategy is, this is strategy for support and advocacy. I just want to highlight 4 points where we can say that we can succeed in the right direction to fill this gap and bring both entities of both segments of one entity together to make the life successful. One is the capacity building, not sympathizing.
because the men and the women, they both work in environments where we have four different dimensions: human resource management, material resource management. We call it in management sciences internal environment, external environments, where the men and the women, they work together. So my first pillar of the strategy is that we need to build the capacity of the women instead of asking the men to sympathize for the women's share. Instead of asking the requesting for the due share, they should build. There's a need to build the capacity and then move forward. The second is mentoring for specific roles. We know in the organizations where we function, we have roles like manager, governor, administrator, controller, supervisor, director, organizer, executives. Then we need to work for the women to provide them mentorship for specific roles where they have the passion and they can proceed further. The third point is the education awareness. Education awareness has become so simple nowadays because of the social media, and we need to develop on the skill. We need to work on the skill development basically, and that has to be based on the computer technology. And I would specifically mention oral and the written power of the women and having that kind of superior skills. And that has to be based on the deductive and deductive form of knowledge, which we say. And the last point I want to highlight is the convergence, not confrontation, like the Western women they have gone. Because if we go for confrontation, mean that you are dividing, you are putting a wall between you and the men. That has not worked in the Western world, and that's not going to work in times to come also. We need to go for convergence and collaboration, which means that having that inclusiveness and coexistence. So this is how I would say with these four main points of the strategy, which I perceive should work for the required aim, that is to define the role of men's male allies in combating harassment, strategies for support and advocacy, which is the topic of today. I'm so grateful to Dr. Sayma to give me a chance to speak on the subject, which is which has many dimensions, and I'm sure it can set a stage for further discussion. It can generate number of questions also, but my specific studies are to study the domain of today's subject from Western point of view and from the Islamic point of view. And my conclusion is that probably both have gone not in the right direction. From the Western point of view, they have gone for the confrontation, not for the convergence. Where in the Islamic world, we have totally ignored the teachings of Islam and we have gone on the first school of thought, which I elaborated. Thank you very much, Dr. Sayma. Thanks. Thanks everybody for having that kind of patience to listen to me. Thank you very much. Thank you so much, sir, for such a thought-provoking presentation. Definitely, you're absolutely right that we should not go for confrontation because obviously the without male allies, we cannot do anything without male or even female. So we should work in collaboration rather than confrontation. तो वही चीज आज हम लोगों के डिस्कशन में है. So let's Dr. Shahid Mir. So my question to you is, what are the common misconceptions or challenges that we face due to male allies and how they can be overcome? Thank you, Dr. Sayma. A wonderful presentation by Dr. Bashir. Thank you for that. Acha ji, the question that you have asked about the common misconceptions, पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि what do we actually mean by अनशेयर कर दीजिए ताकि ये डॉक्टर शाहिद का वो डिस्प्ले आ जाएगा ना. जी प्लीज डॉक्टर शाहिद. जी, मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन तो नहीं है प्रेजेंट करने का. It's okay. या ओके. सो पहले तो हमें थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट डू वी मीन बाय हरासमेंट, और फिर उसके बाद हम फर्दर वी कैन गो इनटू द अदर एलिमेंट ऑफ दैट. सो हरासमेंट, और फिर अगर आप उसको स्पेशली अगर वर्क प्लेस पे करेंगे तो व्हाट डू एक्चुअली मीन बाय दैट.
सो हरेसमेंट जो है ना, ये एक अनवांटेड बिहेवियर है, विच कुड बी फिजिकल और वर्बल, that makes a person feel uncomfortable, humiliated, or even mentally distressed. So harassment is a broader term. ये कुछ स्पेसिफिकली कोई फोकस नहीं कर रहा, बट देन अगेन बहुत सी चीज़ों को ये फोकस भी करता है. और व्हेन वी टॉक अबाउट harassment, it includes lot of things. Offensive jokes हैं, abusive language है, नेम कॉलिंग है, फिजिकल असॉल्ट्स हैं, इंटिमिडेशन है, आप किसी को रेडिक्यूल कर रहे हैं या मेकिंग मॉकरी ऑफ देम, उनके इंसल्ट कर रहे हैं, और बिलिटलिंग देम, और पुटिंग देम डाउन, कुछ ऐसे आप पिक्चर्स एग्जिबिट कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स इंटरफेरेंस विद पीपल. ये इतना कॉमन वो चीज़ है कि इवन हम रियलाइज भी नहीं करते कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू. हमारे कल्चर में, हमारे एनवायरनमेंट में हम इस तरह की बहुत सी चीज़ें करते हैं, बहुत कॉमनली करते हैं, और सब करते हैं. ये नहीं कि सिर्फ मेन करते हैं या वेमेन, दोनों उसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि बहुत कॉमनली यूज करते हैं. जैसे हम अक्सर अपने मुलाजमीन को, घरों पर हों या ऑफिस में हों, हम उनको बड़े कॉमन वर्ड्स इस्तेमाल यूज करते हैं हरासमेंट के जुमरे में जो आते हैं, कि हम कहते हैं तुम निकम्मे हो, तुम कामचोर हो, तुम्हें काम करना नहीं आता, पता नहीं कहाँ से तुम उठ के आ गए हो, किस इलाके के हो, क्या जबान बोलते हो. एंड देन अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी यूज टू ह्यूमिलिएट देम. ठीक है, और उसमें जो है हम बड़े कॉमनली ये सब कर रहे होते हैं, और विदाउट रियलाइजिंग के आप जिसको ये ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, उसके उसकी परफॉर्मेंस पर या उसकी मेंटल स्ट्रेस पर कितना इमोशनली जो है, फिजिकली जो है वो मेंटली उसका कितना उस पर वो स्ट्रेस आएगा. और ये हमारे लिए एक बहुत ही एक कॉमन चीज़ है जो हम करते होते हैं. फिर अगेन हरासमेंट में सिर्फ वर्बल हरासमेंट नहीं है, देर आर नॉन वर्बल हरासमेंट एज वेल, कि जिसमें जो हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जेस्चर्स कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे दूसरा जो है वो उससे जो है वो जो मैसेज ले रहा होता है, विच मीन्स दैट कि हम उसको उसको बिलिटल कर रहे हैं, उसको अंडरमाइन कर रहे हैं. फिर फिजिकल जो है वो आपकी हरेसमेंट है, जिसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे लोग गिरोबानों तक पहुंच जाते हैं, और एक एट द सेम टाइम वर्क प्लेस पे अनवांटेड टचिंग है, और असॉल्ट्स है, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आती हैं. फिर एट द सेम टाइम देर आर सर्टन विजुअल हरासमेंट्स, जो कि आप देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ किस्म के जेस्चर्स जो हैं वो दे रहे होते हैं, या आई कांटेक्ट में कर रहे होते हैं, या हमारे यहाँ वो बड़ा कॉमन है कि फिक्रे पास करना. लोग गुजर रहे होते हैं, खवातीन गुजर रही होती हैं, तो उनको अजीब अजीब किस्म के उनको आप फिक्रे पास कर रहे होते हैं, अब्यूज़ कर रहे होते हैं. और दैट इज़ अगेन बड़ा एक नॉर्मल हमारे यहाँ वो एक तरह से वो समझा जाता है. फिर अब जो नई फॉर्म जो हरासमेंट की आ गई है, वो साइबर हरासमेंट आ गई है. एंड यू सी देयर आर लॉट ऑफ सोशल मीडिया पे, आप देख लें कि सोशल मीडिया पे किस किस्म की जो हरासमेंट्स हैं वो हो रही हैं, जिसमें धमकियां दी जा रही हैं, जिसमें अजीब अजीब किस्म की वीडियोस बना के डाली जा रही हैं, जोक्स बना के, मेम्स बना के, और पता नहीं क्या कुछ करके जो है वो आप हर तरह की हरासमेंट जो है वो अपने दूसरों को जो है वो लेट डाउन करने के लिए वो आप कर रहे होते हैं. बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन कि जी मिसकंसेप्शंस क्या हैं अबाउट हरासमेंट, तो ये एक तो मिसकंसेप्शंस ये हैं कि इट्स नॉट जस्ट फिजिकल. फिजिकल सिर्फ हरासमेंट नहीं है कि आप फिजिकली लोगों को जो है वो हरास कर रहे हैं. इट कुड बी नॉन फिजिकल एज वेल. जेस्चर्स हैं, अनवांटेड एडवांसेस हैं, और अजीब किस्म की जो है वो आप उनको पेशकशें कर रहे होते हैं, या उनको इनवाइट कर रहे होते हैं, या कुछ इस तरह की आप एलिमेंट्स कर रहे होते हैं, जिससे जो है वो हरासमेंट का फिर उसमें जो है वो एलिमेंट आ जाता है. एट द सेम टाइम जो हरासर जो 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 हरासमेंट को जो बेचारे शिकार होते हैं, आप उन्हीं को विक्टिम बना देते हैं, उन्हीं को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. और दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी, कि अगर कोई ख़ास तौर पे ख़वातीन अगर कोई बड़ी मुश्किल से अगर उन्होंने कुछ रिपोर्ट किया है, जो अक्सर आप देख रहे हैं हमारे यहाँ, जो रिपोर्ट किया है कि किसी भी किस्म की हरासमेंट, हम उल्टा उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. और उनको ब्लेम करने का सारा जो है वो कि जी आपकी वजह से हुआ है, आपने इस किस्म के कपड़े पहने थे, आपने फलां ये किया था, आपने इस तरह किया था. अभी आप रिसेंटली इवेंट देख लें कि वो खातून जो है वो एक अरबिक जो है वो
अल्फ़ाबेट्स का जो है वो पहन के चली गई, और उसका कोई भी दीन से, कोई भी कुरान से किसी तरह का भी लेना देना नहीं था। लेकिन अगेन पीपल स्टार्टेड शाउटिंग एट हर, और उसको फिर जो उसको हरास करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि फिर somebody has to intervene, a police has to come in, और उसको बड़ी मुश्किल से बचा के लेकर गए, अदरवाइज एक बहुत ही अगली इंसिडेंट जो है वो हो सकता था। सो एट द सेम टाइम जो लोग भी सामने नहीं आते, जैसे बहुत से लोग अभी भी, इवन इवन आप वेस्टर्न में भी देख लें, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की बात है, इवन इन द यूएस अभी आपको देखें कि उनके प्रेसिडेंट्स और उनके कुछ और जो पोजीशन ऑफ पावर में थे, उनके खिलाफ खवातीन ने खास तौर पे बोलना शुरू कर दिया, और आप देख रहे हैं कि उनको दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग अबाउट इट। और फिर लेकिन फिर जो लोग बहुत से बोलते इसलिए नहीं है कि देयर इज लॉट ऑफ फियर ऑफ रिटेलिएशन, के लोग अगर कोई बोलेंगे तो उन्हीं के खिलाफ जो है वो लोग ज्यादा बोलेंगे, तो वो फिर इस केस के में वो फिर सामने नहीं आते। एट द सेम टाइम हमारे क्योंकि वो प्रोटेक्शन नहीं है, इवन फैमिली में प्रोटेक्शन नहीं है, कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्ची के खिलाफ अगर कुछ हो गया है तो हम बच्ची को ही ब्लेम करते हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि क्या वजह हो सकती है या परपिट्रेटर्स कौन है और क्या है। सो देर आर लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। और फिर एज वी मूव अलोंग अपनी हम डिस्कशन आगे लेके जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह जो है वो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अगेन हरासमेंट इज नॉट जस्ट फ्रॉम द मेल साइड, इट इज फ्रॉम द फीमेल साइड एज वेल। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि इवन हमारे घरों में भी जो हमारी ख़वातीन हैं वो दूसरे जो मुलाजमीन होते हैं उनको किस तरह उनको ट्रीट कर रही होती हैं, सो दैट ऑल्सो कम अंडर द डोमेन ऑफ हरासमेंट। सो अगेन हमें पूरे अपने कल्चर को, हमारे लोगों को बहुत तरीके से अवेयरनेस देनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा कि एक्चुअली हरासमेंट है क्या, और किस तरह हम उससे निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद। वेरी राइट कि हरासमेंट हमारे घर से ही स्टार्ट होती है, कि हम अपने स्पेशली जो आपके हेल्पर्स होते हैं उन्हीं के साथ हरासमेंट कितनी हम नॉर्मली देख भी रहे होते हैं। न्यूज़ में भी आता है कि बहुत बुरी तरीके से मारा है, या कुछ इस तरह फिजिकल अब्यूज भी होता है उसमें, मेंटल अब्यूज भी होता है, वर्बल अब्यूज भी होता है, हर किस्म का अब्यूज बहुत कॉमनली यूज किया जाता है स्पेसिफिकली। तो बहुत एक्सटेंट है, वरना नॉर्मली हम बहुत आम किस्म के वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम खुद भी कर रहे होते हैं। और बाद में जब रियलाइजेशन पार्ट आया बनती कि जा रही हैं वो चीजें। जी बिल्कुल, बिल्कुल। या जी डॉक्टर असगर साहब, सो माय क्वेश्चन टू यू जी इज, जी what role does education and awareness play in engaging men as allies in the fight against harassment? जो डॉक्टर बशीर ने बड़ी अच्छी बात की कि बेसिकली हमारी कोई मतलब कन्फ्रंटेशन वाली चीज नहीं है, लेकिन जो मैं यहाँ पर देखती हूँ फेमिनिज्म का जो यहाँ पर एक डायरेक्शन जाती जा रही है, जिसके मैं बिल्कुल भी पर्सनली फेवर में नहीं हूँ ऑब्वियसली, कि फेमिनिज्म को एक बड़ी नेगेटिव किस्म का डायरेक्शन देती है, कि लगता है कि जैसे कि हम बिल्कुल ही कोई दो अलग अलग मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को जिस तरीके से डॉक्टर बशीर ने काफी अच्छी तरीके से कुरान पाक के रेफरेंसेस देके हजरत आदम और हजरत हव्वा से जो लेके स्टार्ट किया, कि जाहिर सी बात है कि मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने पार्टनर्स पैदा किया, उसके अलावा मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने एलाइज पैदा किया, ना कि ये कि कन्फ्रंटेशन में जाएंगे और कन्फ्रंटेशन में जाके देखें गलत और सही हर कोई कर सकता है, लेकिन जो सही है वो वो चंद लोग जो सही हैं उनकी वजह से ही दुनिया चल रही है, या ये कह लें कि हमारे कल्चर में कुछ जो है वो स्टेबिलिटी है, अदरवाइज डेफिनेटली नहीं वो हो सकता। तो जी डॉक्टर साहब। Thank you, Dr. Sayma, for inviting me as a panelist for this wonderful discussion. डॉक्टर बशीर साहब और डॉक्टर शाहिद साहब ने काफी कुछ तफसील से बयान भी कर दिया है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उन्होंने कवर भी किया है हैरेसमेंट के हवाले से। देखें, जो बुनियादी बात है वो ये है कि हैरेसमेंट का इशू जो एक इमर्ज कर रहा है इस वक्त, अगर मैं सिर्फ इसको पाकिस्तानी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में रखकर बात करूं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त हमारी खवातीन जो हैं वो जॉब मार्केट को ऑक्यूपाई कर रही हैं। ये जो एक राइजिंग केसेस भी हमें नजर आते हैं हैरेसमेंट के हवाले से, स्पेशली वर्क प्लेस हैरेसमेंट के हवाले से, तो उसकी वजह भी यही है कि अब हमारी जो खवातीन है ये पहले से बड़ी तादाद में जो है ये प्रोफेशनली
आगे बढ़कर सामने आ रही हैं। तो इसलिए ये एक फेनोमेना भी डेवलप हो रहा है। देखिए, हैरेसमेंट का जो बुनियादी ताल्लुक है वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर से है। बुनियादी तौर पर हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी एक पेट्रियार्की पर बेस करती है, एक पिदरशाही समाज है ये। तो हमारे यहाँ औरतों को वैसे ही कमतर समझा जाता है। देखिए, बात ये है कि हम दुनिया भर के मसाइल को जो है वो एक डॉगमेटिक अंदाज में हल करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि हर मसले के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम उसके लिए एक रिलीजियस जस्टिफिकेशन भी सामने लाएं। देखिए, औरत और मर्द के दरमियान सिर्फ एक ही फर्क है, सिर्फ एक फर्क है, और वो है बायोलॉजिकल फर्क। इसके अलावा सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, साइकोलॉजिकली औरत और मर्द के दरमियान कोई भी फर्क नहीं है। साइंटिफिकली ये सब बातें प्रूफ हो चुकी हैं। तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी स्टेरियोटाइप्स हैं, बहुत सारे टैबूज हैं, और चूंकि हमारी एक मेंटल कंडीशनिंग इस तरह से हो चुकी है, हमारा एक जो एवोल्यूशनरी जो हमारी एक साइकोलॉजी है, एक जो हमारी इर्तकाई नफ्सियात है, कि हम उन टैबूज से, हम उन स्टेरियोटाइप से बाहर निकलकर सोचना नहीं चाहते हैं। तो जो चीजें हमें पढ़ा दी गई हैं हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में, खवातीन के हवाले से या उनके रोल के हवाले से या उनके स्टेटस के हवाले से, देखिए दुनिया बदल रही है। अब नए नजरियात सामने आ रहे हैं, दुनिया भर में जो है वो खवातीन की तहरीकें एमर्ज होकर सामने आ रही हैं, और बहुत सारी चीजें। देखिए, किसी मूवमेंट के किसी खास पर्टिकुलर हिस्से पर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एज अ होल हम उस पूरी मूवमेंट को, उस पूरी तहरीक को हम जो है वो डिस्कार्ड कर दें, हम रिजेक्ट कर दें। ठीक है, हम किसी एक पर्टिकुलर उस पर बात कर सकते हैं। तो देखें, एक डिस्क्रिमिनेशन तो है, एक तासुब तो है, एक फर्क औरत और मर्द के दरमियान रखा तो जाता है। ये हमारी सोशल रियलिटी है। अब हम चाहे इसको जितना भी जस्टिफाइड करने की कोशिश करें, हम इसे किसी तरह से भी डॉगमेटिक अंदाज में बयान करने की कोशिश करें, लेकिन ये हकीकत तो बहरहाल पाई जाती है कि हमारे यहाँ खवातीन को जो है वो मर्दों से कमतर समझा जाता है। ये हमारे घरों में जो बेसिक यूनिट होता है सोसाइटी का, घर, वहां पर इस तरह की बातें हैं। और फिर देखिए, बुनियादी बात यह है कि एक औरत को, औरत डिफाइन कौन करता है? वो भी मर्द करता है। एक औरत की जो डेफिनेशन है वो भी मर्दाना समाज की जानिब से आती है। औरत को कैसे उठना चाहिए, औरत को कैसे बैठना चाहिए, औरत को बात कैसे करनी चाहिए, औरत को चलना कैसे चाहिए, ये भी मर्दों ने तय किया है। क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पेट्रियार्की है, ये भी मर्दों ने तय किया है। औरत की खूबसूरती को के जो मयार है ये भी मर्दों ने तय किए हैं, और औरतें उन्हीं मयारात पर चलना चाहती हैं। आप रिश्तों की बात देखें तो जो भी तौर तरीके हैं, जो भी कंडीशंस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी मर्दों की जानिब से तय किए गए कि जी आवाज नीची हो, चाल ऐसी हो, बैठना ऐसा हो, हंसना ऐसा हो, बोलना ऐसा हो। तो ये टोटल एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की तरफ से ये बातें आई हैं। औरतों का किरदार भी यहाँ पर मर्द ही तय करते हैं। जो कुछ आप कह रही हैं ये नजरियात भी मर्दों की जानिब से आते हैं। वो वही कुछ, आप चूंकि एक्सेप्टेबिलिटी का मसला है, अगर आप इस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होना चाहते हैं, काबिल कबूल होना चाहते हैं, तो फिर आपको वही कुछ करना पड़ेगा जो मर्दों ने तय किया है। उठना, बैठना, खाना पीना, चलना, आपके कपड़े, आपकी ड्रेसिंग, आपका फैशन, आपका मेकअप, आपकी ज्वेलरी, ये सब मर्दों ने डिफाइन किया हुआ है। आपको एक्सेप्टेंस चाहिए तो उन पर अमल करें। हम समझते हैं कि ये बातें अब नहीं होनी चाहिए। औरत भी उसी तरह से आजाद है जिस तरह से कि एक मर्द आजाद होता है। और देखें ना, हमारे यहाँ पर औरतों के साथ अगर कोई वाकया होता है, कोई भी वाकया होता है, कोई हैरेसमेंट का वाकया होता है, कोई रेप, फोर्स रेप का वाकया होता है, कोई और मसला होता है, तो जुमले क्या आते हैं? जी इनको तो घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए था। यानी कि आप विक्टिम जो है उसको ब्लेम कर रहे हैं कि जी उसके कपड़े ठीक नहीं थे तो मर्द ने आवाज लगा दी, चूंकि उसने जीन्स पहनी हुई थी तो किसी ने उसको ऐसे देख लिया, वो रात को सफर कर रही थी तो उसके साथ ये हो गया। भाई, ये बातें अब डेवलप्ड कंट्रीज में या तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं की जाती है, बल्कि वो कहते हैं कि एक जुर्म है, एक क्राइम है। लेकिन आप उस क्राइम को भी कपड़ों से, ड्रेसिंग से और रात के बाहर निकलने से जस्टिफाइड कर रहे होते हैं, और आप उन क्राइम्स को एक तरह से वैलिडेट कर रहे होते हैं। बात बुनियादी तौर पर यह है कि हमारी सोसाइटी जो है इसका सोशल बैकवर्डनेस अपने बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर है।
तो इसलिए चाहे हैरेसमेंट का मसला हो, चाहे मेल कॉलीग्स के बिहेवियर का या सोशल बिहेवियर का मसला हो या दीगर एटीट्यूड हो, तो हर जगह हमारा जो एक सोशल बैकवर्डनेस है वो भी नजर आता है। हम अभी तक ओपनली या खुले दिल से खवातीन को अपने बराबर तस्लीम नहीं कर रहे। देखिए ये टूट रहा है। मैं आपको बताऊं कि समाज हमेशा आगे की जानिब सफर करता है, समाज पीछे की जानिब नहीं जा सकता। ये सारे टेबूज टूट रहे हैं, ये सारे स्टेरियोटाइप्स टूट रहे हैं, और एक जो पहले एक कल्चर ऑफ साइलेंस था वो भी टूट रहा है। अब खवातीन आगे बढ़कर बात कर रही है। अगर कोई उन्हें हैरेस कर रहा है या कोई उनके साथ कोई बात करता है तो वो बाकायदा फोरम्स पर आती हैं, आवाज उठाती हैं और अपनी बात करती हैं, और मेरा ख्याल है करना चाहिए। तो इस कल्चर को हमें प्रमोट करने की भी जरूरत है, ताकि अगर किसी के साथ गलत होता है तो उसकी बात सुनी जाए। जी बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब, लेकिन बात ये है कि मेल्स का इसमें क्या रोल, पॉजिटिव रोल मेल्स क्या प्ले कर सकते हैं? तो उसी से रिलेटेड डॉक्टर बशीर, बल्कि हमारा मीटिंग होने वाली है, हर में ज्वाइन करके फिर हम करते हैं। थैंक यू।